Hello everyone, I welcome you all to Biology Lessons with Kalyani. Today we are going to discuss prokaryotic cell in detail and an overview of eukaryotic cell. Let's move on to the slides. Prokaryotic cells. Pro means before, karyotic means nut or kernel. So what are prokaryotic cells? These are basically single-celled organism. Mane organism jadre only one cell achi or unicellular organisms. These lack a membrane-bound true nucleus and other membrane-bound organelles. Kona typical two characteristics of prokaryotic cell? They lack a true nucleus. Second hela, yanko bhitere kichi membrane-bound organelles nahi. Membrane-bound organelles such as endoplasmic reticulum, Golgi body, Mitochondria, chloroplast, these are absent in prokaryotes. Our true nucleus nahi mane, what does that mean? Mane prokaryotes manankara genetic material, it is naked or it is not bound by any membrane. It lies freely suspended in the cytoplasm. A nuclear material को हमें कौन कही थाउ? हमें न्यूक्लियोइड कही थाउ और जीनोफोर भी कही थाउ. Clear? Now examples of prokaryotic cell जदि हमें देखिबा, bacteria, blue green algae, mycoplasma, PPLO जोटा को हमें previously कहतुलु, these are all examples of the prokaryotic cell. Generally prokaryotic cells are smaller and multiplication rate टाको जदि हमें देखिबा, it is higher compared to the eukaryotic cell. Clear? Next slide देखिबा. एबे जदि हमें shapes of bacteria देखिबा, bacteria exist in a variety of shapes. Anko bhitaru 4 basic shapes are important. What are the shapes? Bacillus, that is nothing but rod shape. Iti dekho, gotte rod shape bacteria achi, taku ame kon kahi pariba? Taku ame kahi pariba monobacillus. Dita rod shape bacteria achi, diplobacillus. Gotte chain heiki achi, streptobacillus. Clear? Ebe dekho, second shape hela cocci. Cocci ta kono spherical shape. एठी देखो गोटे स्फीयर अछि कहबा मोनोकोकाई, दीटा स्फीयर अछि डिप्लोकोकाई, चेन ऑफ स्फीयर्स अछि कहबा स्ट्रेप्टोकोकाई, गोटे ग्रेप्स बेलिया अछि तमरो स्फीयर्स गुडा ताकू कोन कहि परिबे मे स्टेफाइलोकोकाई. क्लियर? एटा हला तमरो कोकाई शेप. थर्ड शेप हला विब्रियो. विब्रियो टा नथिंग बट कॉमा शेप. एठी देखो एटा कॉमा बेले देखा जाउछि ना नै? तमरो Vibrio cholerae is an example of Vibrio bacterium or a comma-shaped bacterium. Clear? Ebe dekho spirillum. Spirillum ta nela nothing but spiral-shaped bacteria. Right? Now, ebe ame dekhile bacteria shows different type of shapes, but irrespective of that, the basic structural organization in all the bacteria is similar. Clear? Next slide. Characteristic features of prokaryotic cell. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. First important feature hela cell wall. Plant cells bhediya bacteria re bhi prokaryotes re bhi tamara outside gote cell wall present thai. Exception kon yara? Mycoplasma. Very important exam perspective lo. Second point hela semi-fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. Ta bhitare jodi ame dekhiba prokaryotes ro inside gote semi-fluid matrix hai, ame taku cytoplasm kohithau, just like the eukaryotes. There is no well-defined nucleus. The genetic material, the single chromosomal circular DNA is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane called the nucleoid. I already discussed kari sarchu. Prokaryotes lack a well-defined nucleus. Kon tara mane genetic material ta surround heini kichi nuclear membrane ru. It is basically called naked, and also we can term it nucleoid.
ए जो नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल जदि हमें कथा कहबा, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर? एबे कौन हुए ना ए जेनेटिक मटेरियल छड़ा किछि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी थाए। In addition to the genomic DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA called as the plasmids. यही एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोमल डीएनए थाए ताकू आमे प्लाज्मिड्स कहूथाउ। प्लाज्मिड डीएनए confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. Example, resistance to antibiotics. एबे ए प्लाज्मिड्स कौन करंती ना प्लाज्मिड स्पेशल ट्रेट दियंती जो भी बैक्टीरिया रे से माने प्रेजेंट थांती। वन ऑफ द एग्जांपल इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आमे देखिथिबा फीवर जते बेले हमको हुए केतेले केतेले एंटीबायोटिक काम करे ना, डॉक्टर कहि दियंती बैक्टीरिया टा रेजिस्टेंट अछि ए एंटीबायोटिक को। तो ये जो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ए ट्रेट टा is not because of the chromosomal DNA, it is because of the plasmids, which is extra chromosomal single circular double stranded DNA. ए प्लाज्मिड्स को ही आमे यूज करू हमर सबु जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट रे टू कैरी द फॉरेन डीएनए और वी यूज इट एज अ वेक्टर। Plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. यार डिटेल हमें अपकमिंग क्लासेस रे पढ़िबा। एबे ए जिंसटा खाली मने रखि देथाओ। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मिड। ता माने आमे जदि देखिबा बैक्टीरिया दे पोजेस वन जेनेटिक मटेरियल एंड वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। तो जेनेटिक मटेरियल ता हैला डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए which is called nucleoid not bound by any membrane. Our extra chromosomal ta hela tamara double stranded circular, it is called as plasmid. Clear? Ebe prokaryotes have something unique in the form of inclusions and mesosomes. Prokaryotes vitare gote unique structural feature thae which we call it as inclusions and mesosomes. Ame detail next slide re padhiba sabu. Now cell envelope and its modification. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure, the outermost glycocalyx, followed by the cell wall and then the plasma membrane. कौन यार माने that prokaryotes case रे गोटे single protective unit थाए and we call that single protective unit as cell envelope. And what is that cell envelope made up of? This cell envelope is made up of three layers. Outermost layer is called as glycocalyx, middle layer is cell wall and the innermost layer is cell membrane. The cell envelope जदि हमें कहबा ता माने कोन cell envelope is equal to glycocalyx plus cell wall plus cell membrane. एमानकर function of all the three layers is different, but together they act as a single protective unit. I hope it's clear. Next slide देखिबा gram staining. एबे bacteria on the basis of the cell envelope आमे two types रे divide करि परिबा. That depends on how the bacteria are taking up a stain. The name of that stain is gram stain. एटी देखो based on the differences in the cell envelopes, bacteria can be classified into two groups, two types. Relies on the way they respond to the staining procedure developed by gram. The gram jaha develop करथिले गोटे staining method तार basis रे आमे classify करूचे. Those that take up the gram stain are gram positive. जो माने gram stain को take नहीं जानती भितर को और stained ही जानती, colored ही जानती, हमें तंगु gram positive कहूथाओ. And others that do not are called as gram negative bacteria. जो माने नियंत्रिनी भीतर को that we call is as the gram negative bacteria. एबे एठी पिक्चर रे देखो एठी मु दीटा पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया नीची. ओके मु फर्स्ट ऐड कली गोटे डाई. द नेम ऑफ इट इज क्रिस्टल वायलेट. तो एटा कोन करे ना बैक्टीरिया को पर्पल ब्लू कलर स्टेन करि दबो. सेकंड मु ऐड कली आयोडीन जोटा कि कलर को एनहांस करिवो.
राइट एबे ए दीटा को मिसे के हमें कहूछु ग्राम स्टेन तो ग्राम स्टेन देले कौन हुए ना तमरो पर्पल कलर बैक्टीरिया शुड बिकम बट आफ्टर दैट व्हाट वी डू आमे गोटे अल्कोहल वॉश टेप करू ए अल्कोहल वॉश टेप रे कौन हुए ना जो किछिटा बैक्टीरिया कौन करे ना सीए कलर टाकू अपटेक करी पारे ना आउ इट लूजेस इट कलर बिकॉज अल्कोहल इज रिस्पांसिबल फॉर डीनेचुरेशन तो डीनेचुरेशन से करी दिए आउ किछिटा बैक्टीरिया कौन करंती ना तांगर कलर को लूज कर दियंती ते आउ तापरे हमें कौन करू ना गोटे काउंटर स्टेन यूज करू सैफ्रोनिन तो जो बैक्टीरिया कलर को लूज करी थारथिले से माने कलरलेस देखा होतले व्हाई बिकॉज हमें अल्कोहल ऐड करथलु गोटे डीनेचुरेंट सेटा प्रोटीन लेयर को डीनेचर कर दी थाए तो बैक्टीरिया रा कलर टा कौन हुए लॉस हो जाए तो कौन हुए तो बैक्टीरिया जो काउंटर कलर टा अच्छी सेटा को सीए अपटेक कर दिए which is saffronin counter color किछि न गोटे सेकंड कलर हमें यूज करू which is reddish pink in color तो से बैक्टीरिया कौन करंती पर्पल कलर टा लूज कर दे कि पिंक कलर अपटेक कर दियंती on that basis finally जेतेबेले we observe some of the bacteria they appear bluish purple under the microscope we call it gram positive and some bacteria appear reddish pink on the under the microscope we call this gram negative bacteria I hope that's clear so that is all about gram staining एबे आमे आउ टिके डिटेल रे देखिबा सेल एनवेलप रो डिफरेंट structures भितरे first layer outermost layer glycocalyx टा nothing but carbohydrate units रो बनिछि it differs in composition and thickness among different bacteria रे different thickness रो glycocalyx थाए sometimes it can be present as a loose sheath glycocalyx टा जदी loosely attached है कि गोटे sheath भलिया थिबो ताकू आमे कहिबू slime layer or sometimes कौन होबो ना it appears as a thick and tough sheet what do we call it that we call it as capsule जदी लूज है कि थिबा हमें कहबो ताकू slime layer जदी tight thick और tough layer भलिया थिबो ताकू हमें कहबो capsule मझिरे जो लेयर टा थिला ताकू हमें कहतलु सेल वॉल टा कौन करे ना सेल वॉल हमें जानी छु rigid in nature excuse me it determines the shape of the cell and it provides a strong structural support cell wall ही bacteria को mechanical support दिए और prevents the bacteria from bursting or collapsing बहुत जेमती extreme climate रे भी जो bacteria survive करी पारे it is because of the presence of the cell wall innermost layer of the cell envelope is कौन plasma membrane now it is mostly similar to as that of the eukaryotes it is selectively permeable in nature it interacts with the outside world and the membrane is similar structurally to that of the eukaryotes that's all about cell envelope एबे देखिबा मेसोसोम्स आमे पढ़िथिले स्पेशल फीचर मेसोसोम इंक्लूजन बॉडी फर्स्ट आमे देखिदबा व्हाट आर मेसोसोम्स नाउ mesosomes are special membranous structure which is formed by the extension of plasma membrane into the cell कौन हुए एटा देखो ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल एटा तुमरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किछि समय रे कौन हुए ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो किछि पार्ट साइटोप्लाज्म भीतर को पसी आसी थाए व्हाई बिकॉज़ सेल मेम्ब्रेन ता तुमरो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर ओके तो से भीतर को पसी आसे से इनफोल्डिंग्स को आमे एक्सटेंशंस को आमे कौन कहू थाउ ना ताको आमे मेसोसोम्स कहि थाउ तो मेसोसोम्स आर बेसिकली इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एबे केमिति ए मेसोसोम्स ता हे परिबो ए मेसोसोम्स ता वेसिकल शेप रे हे परिबो ट्यूब्यूल शेप रे हे परिबो लैमेला शेप रे हे परिबो राइट तो
आर काम मेसोजोम्स रो कोन एबे देखो जदी हमें फ्लैट सरफेस आ गोटे फोल्डेड स्ट्रक्चर को कंपेयर करिबा व्हिच हैज मोर सरफेस एरिया ऑब्वियसली द फोल्डेड स्ट्रक्चर तो फोल्डेड स्ट्रक्चर जेहेतु एरिया बेसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बेसी हबो दैट्स द होल पर्पस अबाउट द मेसोजोम्स फंक्शंस जदी हमें देखिबा मेसोजोम्स ता कोन मेम्ब्रेन रो हेची तो सेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा सेल वॉल पाखरे अछि तो से मेसोजोम्स सेल वॉल फॉर्मेशन रे दैट्स व्हाई हेल्प करे सेकंड पॉइंट हैला मेसोजोम्स हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स मेसोजोम्स तार वेरी फ्लेक्सिबल नेचर थाए तो से कोन करे ना सेल डिवीजन बेले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करियारे हेल्प करे इनटू द डॉटर सेल फॉर्मेशन रे हेल्प करे थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ मेसोजोम्स हैला रेस्पिरेशन एबे बैक्टीरिया रे तो माइटोकॉन्ड्रिया नाही तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मेसोजोम्स फोर्थ पॉइंट हैला सिक्रीशन एबे कोन हुए ना मेसोजोम्स आमे देखिथिलु एठी वेसाइकल्स भेलिया हेची तो वेसाइकल भितरे से कोन करिवो ना इनसाइड किछि इंपोर्टेंट सब्सटेंस पैक करि परिवो एंड इट कैन सिक्रेट इट आउटसाइड So these are the functions of mesosomes. Very important topic. अलगा जहाँ भी features अच्छी bacteria रो गोटे हैला chromatophores. These are membranous extensions into the cytoplasm which contain pigments. कौन हुए ना जेमती आमर मेसोजोम्स रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डेड के भीतर को पसी आसला सेमिति क्रोमाटोफोर्स केस रे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा फोल्डेड हेतिबो भीतर को साइटोप्लाज्म भीतर को पसी आसीतिबो बट पॉइंट कोन ना दीस मेम्ब्रेन्स कंटेन पिगमेंट्स क्रोमा माने हला कलर और पिगमेंट सेमती मन रखि दबो आ गोटे हमर फीचर भी प्रोकैरियोट्स से देखिया को मिले दैट इज इंक्लूजन बॉडीज reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body तो यारा कौन काम कौन ना extra material or reserve material where is it stored it is stored in inclusion bodies these are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm membrane bound है न थाए गोटे पर्टिकुलर एरिया रे लोकलाइज हे की थांती और ग्रैन्युल्स भेलिया और पार्टिकल्स भेलिया तमरा कोन जहां भी रिजर्व मटेरियल अछि सेटा सेटी स्टोर्ड हुए बट पॉइंट टू बी नोटेड इंक्लूजन बॉडीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन एग्जांपल्स ऑफ इट कैन बी फॉस्फेट ग्रैन्यूल देखो ग्लाइकोजन पार्टिकल्स गुडा को स्टोर करे साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल या माने कोन ब्लू कलर और सायन को सेटा स्टोर करे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट इंक्लूजन बॉडी आ गोटे हमर अछि भी फीचर दैट इज कॉल्ड एज गैस वैक्यूल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गैस वैक्यूल कौन हुए ना इट इज फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल green photosynthetic bacteria these are the specialized vesicles filled with gas माने एटी देखो membrane bound vesicles which are filled with gas and what is their function is that they help in maintaining the buoyancy or help the bacteria to float okay they are found where in blue green algae and purple and green photosynthetic bacteria so I hope it's clear next slide देखिबा नेक्स्ट आमे पढ़िबु फ्लैजेला विषय रे एबे गोटे बैक्टीरिया टा मोटाइल हे परिबो और मूव करि परिबो और नॉन मोटाइल भी हे परिबो जदी गोटे बैक्टीरिया टा मोटाइल हैला ताहाले in them flagella is present flagella is nothing but a thin filamentous extension from their cell wall okay now eighty important point to note is flagella is a membranous extension माने एटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ता ही गोटे elongated है कि extend करूची and flagella को form करूची but it passes through the cell wall
It is not made up of cell wall. It is very important. Flagella ta amara cell wall ru houni. Flagella is made from the plasma membrane itself, but it passes through the cell wall, because otherwise how would it come out? Bacteria show a range in the number and arrangement of flagella. Bacterial flagellum is composed of three parts: filament, hook and basal body. एबे देखो bacterial जो flagella अछि, it has three parts. Lower part रे तमरो basal body थाए, मझिरे गोटे hook थाए, सेठू filament बाहरे. Filament is the longest portion. Correct? एटा हैला तमरो flagella रा structure. एबे arrangement of flagella टा differ करि पारे. केमती केमती हेई पारे ना गोटे flagella present हेई पारे bacteria रे, ताको हमें कहबा monotrichous. गोटे bunch of flagella हेई पारे हमरो गोटे end रे seen, ताको हमें कहबा lophotrichous. गोटे bacteria रा both ends रे हमें flagella पाई परिबा, ताको हमें कहबा amphitrichous. गोटे bacteria रे throughout the surface आमे देखि परिबा flagella, ताको हमें कौन कहि दोचे peritrichous. So these are the different arrangements of flagella. Clear? This flagella is made from the flagellin protein. Okay, I hope flagella is clear. एबे हमें देखिबा pili and fimbriae उपरे. Pili and fimbriae are also surface structures of the bacteria but do not play a role in the motility. तो एबे हम bacteria भितरे आमे देखिलु flagella गोटे हैला surface structure. ता छडा हमर कोन surface रे we can see pili or singular हैला pilus आउ otherwise छोटो छोटो आमे bristle like fimbriae भी देखि पारिबा. But a pilus or fimbriae, these two are not helpful for the motility of the bacteria. Flagella ta hi amar motility pai responsible. These pili are elongated tubular structures made of a special protein called as a pilin. Fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in streams and to host tissue. या माने कौन हमारा पिलीटा हैला तमरा elongated tubular structure. It are made up of a special protein. और special protein ना कौन ना pilin. Fimbriae are small bristle-like fibers. Fimbriae hele small bristles-like fibers. What is its function? Eta tamara attachment re help करे. Pilus रा कौन function? Pilus ता तमरा conjugation बेले conjugation tube करिबारे help करे. एटा को मैं sex pilus भी कहि दोछु. Sometimes it also helps in adhering to the host tissue for colonization and for infection रे भी तमको ए pilus ता help करे. Fimbriae ता तमरा biofilm बनेरे help करे. आउ attachment to the rock surface in the streams एगुड़ा रे help करे. I hope all the surface structures, flagella, pili and fimbriae तमरा clear ही जाइची. एबे हमें देखिबा ribosome. Both prokaryotes and eukaryotes रे एई non-membranous cell organelle टा common. In किंतु prokaryotes रे कौन हुए ना ribosomes टा हमरो 70s. eukaryote रे ribosomes टा कौन हुए 80s थाए. prokaryotes रे तमरो छोटो ribosomes मिले and it is 70s. In prokaryotes, ribosomes are associated with plasma membrane of the cell. कौन हुए prokaryote केस रे ribosome टा actually तमरो cytoplasm रे भी थाए, ता छड़ा membrane संगरे attach हेई पारे. किंतु eukaryote रे हमें सही feature देखु ना. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made of two subunits. Theta subunit achi, which then present together to form the 70s. Misikiri 70s karanti. What are their function? They are site for protein synthesis. We know this. Important term 8 asuchi. Several ribosomes may attach to a single messenger RNA and form a polyribosome or a polysome.
The ribosomes of a polysome translate the mRNA into protein. Polysome ta dekhi parcho gote single mRNA achi ta dere bahut sara ribosomes lagi chanti au sabu proteins ku synthesize karuchanti. A structure ta hela polysome, and this is a characteristic feature of the prokaryotes. Very important. I hope it's clear. आमे एबे प्रोकैरियोट रो पूरा सबु स्ट्रक्चरल डिटेल्स विषय रे पढ़ी सारचे गोटे क्विकली सबु को रिवाइज करिकी डायग्राम रे देखि नबा एटा देखो टिपिकल बैक्टीरियल सेल पूरा आउटर मोस्ट लेयर रे ग्लाइकोकैलिक्स अछि ग्लाइकोकैलिक्स दी प्रकार रे हे परिबो लूजली बाउंड हेले आमे ताको स्लाइम लेयर कहि दबा टाइटली बाउंड हेले आमे ताको कैप्सूल कहि दबा ग्लाइकोकैलिक्स तळे अछि सेल वॉल रे तमरो सपोर्ट ओके प्रिवेंट्स बस्टिंग एग्जांपल तापरे ता तळे आसी जिबा हमरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ता तमरो सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर इंटरैक्ट्स विथ द एनवायरनमेंट ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ता इनफोल्डेड हेई सा पारिथिबो in the bacteria, and we call this structure as mesosomes. Okay, membranous infoldings. Our mesosomes रो कौन function important function है ला respiration. ता छड़ा तमरो secretion function आसी परिबो DNA replication function आसीबो cell wall formation. These are all the functions of mesosomes. Bacteria रे तमरो nuclear material is not bound by any membrane, lies freely. Nature है double standard circular DNA. एटी देखो एटा हला जेनेटिक रीजन ताको मैं कौन कहि दो न्यूक्लियोइड कहि दो जिनोफोर भी तार आउ गोटे नेम जेनेटिक मटेरियल छड़ा एक्स्ट्रा रे तमरो कोन प्रेजेंट थाए प्लाज्मिड्स व्हिच इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रोकैरियोट्स केस रे तमरो 70s राइबोसोम्स थाए this can be found scattered in the cytoplasm or sometimes attached to the membrane. सरफेस जदि आमे देखि ए राइबोसोम्स गोटे कथा भूली जाइतली राइबोसोम्स माने पॉलीसोम्स फॉर्म करंती व्हिच इज नथिंग बट पॉलीराइबोसोम्स गोटे मेसेंजर आरएनए थिबो ता दरे सबु राइबोसोम्स अटैच हेकी प्रोटीन सिंथेसिस करूथुबे भीतर रो कथा आमे सबु देखि देलु एबे बाहर को देखिबा बाहर सरफेस स्ट्रक्चर्स जदि आमे देखिबा फ्लैजेला गोटे सरफेस स्ट्रक्चर सेटा तमरो मोटिलिटी पाई हेल्प करूची मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन इट इज अ membranous extension of the plasma membrane but it passes through the cell wall तापरे पाइलस थाए tubular elongated structure मोटिलिटी रे हेल्प करे ना किंतु कादरे हेल्प करे conjugation रे हेल्प करे सेक्स पाइलस बने रे हेल्प करे ओके ता छड़ा bristle like fimbriae is also present एतिकी हेला तमरो स्ट्रक्चरल डिटेल्स अदर स्ट्रक्चरल डिटेल्स कोन होईची क्रोमैटोफोर्स गोटे अछि क्रोमैटोफोर्स कोन करे तमरो मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स जादरे की पिगमेंट पाया जाए इंक्लूजन बॉडी अछि जोटी रिजर्व मटेरियल हमरो थाए ग्लाइकोजन तमरो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स साइनोफेसियन ग्रैन्यूल्स एगुडा सब एग्जांपल ऑफ इंक्लूजन बॉडी आ गोटे गैस वैक्यूल थाए जोटी वेसाइकल भितरे गैस थाए बायंसी रे हेल्प करे सो एगुडा सबु गोटे स्लाइड रो मु सेठी यूकैरियोटिक सेल टा को आमे डिटेल ले पढिबा एबे खाली गोटे ओवरव्यू भीतर रे देखि देबा यूकैरियोटिक सेल्स nuclear membrane is found in eukaryotes they contain true nucleus okay the nuclear material is bound by a membrane no organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for ribosomes ebe ribosome खाली गोटे organelle जोटा कि तमरा prokaryote आउ eukaryote रे common आउ अलगा जहां भी organelles तमरो eukaryotic cell रे थाए that is bound by membrane examples जदि हमें देखिबा protists plants animals fungi are example of eukaryotic cell in eukaryotic cells there is extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles
Examples of membrane-bound organelles can be endoplasmic reticulum, Golgi body, okay, chloroplast, mitochondria. Such type of organelles we don't see in prokaryotes. Eukaryotic cells possess an organized nucleus with nuclear envelope. Genetic material चारिपटे गोटे envelope था हमें discuss करी सारचो. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. Their genetic material is organized into chromosomes. Genetic material टा हमारा chromosomes हिसाब रे कौन था organize है कि था packing जेनेटिक मटेरियल टा फर्दर पैक हे जाए आउ क्रोमोसोम्स गोटे हाईली पैक स्ट्रक्चर को फॉर्म करे. नेक्स्ट स्लाइड देखिबा. All eukaryotic cells are not identical. Plant and animal cells are different as the former possess cell wall. एबे different type of eukaryotic cell अछंती तांको भितरे किछि differences थाए. Plant cells रे आमे cell wall देखु, animal cells रे cell wall मिलेनी. Plastids and a large central vacuole which are absent in the animal cells. Animal cells जदि आमे देखिबा plastids absent थाए और vacuole जोटा थाए सेटा जेमदी plants रे तमरो very large centrally present गोटे vacuole थाए. In animals we get small vacuoles. Okay. On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost all plant cells. Animal cells रे हमको centriole मिले जोटा कि तमरो cell division को करे, but that structure is absent in the plant cells. हमें differences को आउ टिके भलरे देखिबा, but NCERT रे जहाँ देइछि हमें first देखि नबा. So this is difference of prokaryotic cell versus eukaryotic cell. देखो nucleus हला first point well defined nucleus. Prokaryotic रे absent थाए, eukaryotic cell रे present थाए. Nucleoid is present. It is not bound by any membrane or naked. हमें सब एगुड़ा discuss कर सारचे. Plasmid is present in prokaryotes, absent in eukaryotes. DNA is double-stranded circular DNA in prokaryotes, and in case of eukaryotes, it is linear DNA, which is packed further into chromosomes. Ribosomes are smaller and 70S in prokaryotes. In eukaryotes, it is larger or 80S. Cell organelles are absent in prokaryotes. In eukaryotes, present. Type of the cell. Prokaryotes are always single cellular or unicellular. Eukaryotic cells can be unicellular or multicellular. Size ta choto for the prokaryotes than the eukaryotic cell. Cytoplasm, prokaryote is devoid of any organelles. Eukaryotic cytoplasm is compartmentalized into different cell organelles. Cell wall prokaryotes represent थाए very complex है. Eukaryotic cell ले cell wall टा जदि present थिला in case of plants and fungi is relatively simple. Flagella is smaller in case of prokaryotes. In case of eukaryotes is larger. Reproduction जदि देखिबा आमे prokaryotes divide by asexual reproduction while eukaryotes divide by both sexual and asexual reproduction. So these are the difference between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. एबे plant cell और animal cell रो comparison देखि दबा. Plant cells are rectangular or polyhedral in shape because cell wall थाए which is rigid, and due to that we have this type of structure. Animal cells are irregular or round in shape. Size, plant cells are larger than the animal cells. Cell wall is present in plant cell, absent in animal cells. Chloroplast and plastids are present in plant cells and absent in animal cells. Centrosome and centriole is present in animal cells and absent in plant cells. A vacuole jodi ame dekhiba, vacuole is large, prominent. It is found centrally. In case of plant cells, number is few, but in case of animal cells, smaller vacuoles are present. They are scattered throughout. They are mostly temporary. And number can be more. Cytoplasm of the plant cells is less denser than the animal cells. Nucleus is always peripheral in case of plant cell because vacuole occupies a central position, while nucleus is present centrally in case of the animal cells. Golgi body, if present in plants, they are present as dictyosomes. Animal cells,
show prominent Golgi apparatus. Functional lysosomes are absent in plant cells, but they are present in the animal cell. So these are the difference between the plant cell and the animal cell. I hope it is clear. I discuss kari sarche mostly sabu jinsa. Ebe next slide ku diba. ଏବେ ଆମେ क्विकली टिके प्लांट सेल स्ट्रक्चर और एनिमल सेल स्ट्रक्चर डिफरेंस टा को नोट कर दबा. देखो प्लांट्स रो गोटे रिजिड सेल वॉल अछि, एनिमल से सेटा नाही, because of which plants cells have a hexagonal or polyhedral type of structure, while animal cells have a round or irregular structure. ଏବେ देखो plants have a centrally placed vacuole. Do we see a central vacuole in animals? No. Central vacuole makes the nucleus peripheral in case of plants, but nucleus is present centrally in case of animal cells. Plastids are present in plant cells. In animal cells, they are absent, while centrioles are present in animal cells. They are absent in the plant cells. That's all about the difference between the plant cell and animal cells, their important structural differences. I hope it's clear. That's all for today's class. I hope you are clear about prokaryotic cell structure and had an insight into the eukaryotic cell structure as well. If you enjoyed the class, please like, share, and subscribe to the channel for more biology content. Thank you everyone. Have a good day.